Hi, I'm Idris. I'm a Delhi-based photographer. I've been teaching for almost 2 decades now, and it was a pleasure, to come to DCOP and meet some really nice, young, talented photographers. Thank you. Made it 50-400, that is compact lens. At 50 you will able to do half macro. It is a 1:2 magnification lens at 50 mm. So through a lens only you will be able to explore that your wildlife part. You will be able to catch habitat shots, and you know that people like 50 mm focal length in their bag. So through a single lens you can go from 50 to 400. And that will give you like a versatile opportunity in your bag through a single lens. Bag and easy. Now people are more frequent with their traveling. And now we have made that 150-500, which is actually kind of compact lens. You might have seen some 150-600 lenses, 200-500 lenses kind of focal length. This is only size you will see. It is very compact. The weight you will see, it is very lightweight compared to the traditional focal length which we were making and others were making. So for all kind of age group, it is very compact. So good afternoon. Good afternoon, sir. The idea is to share the journey. I was a student once, and I had so many dreams when I started photography. And you will be surprised that it starts with very single assignment. It starts with very humble, simple assignment, and then things unfold for you. But you should have energy. You should have the right vision. I must congratulate that you are here. You are in one of the most reputed institutes of photography in Delhi, I think rather India. But institute will not make you a photographer. You can just take admission, certificate मिल जाएगा. और मैं 21 साल से पढ़ा रहा हूँ photography. तो खाना क्या है? अगर आप वहाँ बैठते हो जाते हैं, ये नहीं ज़बरदस्ती पकड़ के दिखा देंगे. प्रसाद आपको उसी लाइन में मिलेगा जिसमें कि एक बंदा जो मस्जिद से उतरा है, एक बंदा जो स्कूटर से उतरा है, एक जो पैदल आया मेट्रो से, सबको एक ही लाइन में लगती है. बड़ा मतलब एक बहुत ज़्यादा फील है. दिस फेस्टिवल प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ट्रैवल फोटोग्राफी अच्छी लगती है या अपने आप को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो आप सिद्धांत भाई को रिक्वेस्ट करो, ये आपको लेंस देंगे और आप होला मोहल्ला जाके शूट करो. होला मोहल्ला उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन हम होली मनाते हैं. Research, I'm not seeing pictures, क्योंकि जब हम बहुत पिक्चर देखते जाते हैं तो हमें लगता है ऐसी पिक्चर हमें भी मिल जाए. ये मानोगे कि नहीं? आप कहीं भी पिक्चर देख के फेमस गुरुद्वारा कॉल्ड पत्थर साहिब, बड़ी अच्छी हिस्ट्री है. अगर आप सिखिज्म में इंटरेस्ट है आपका तो पत्थर साहिब की हिस्ट्री पढ़िए. तो मतलब बहुत ही पायस, बहुत ही इतना अच्छा वहाँ जाके लगा. एंड वी जस्ट केप्ट आवर कैमरास, जबकि हम वर्कशॉप कर रहे हैं, हमारे पास फोटोग्राफर्स हैं, और वहाँ बैठ के हम सिर्फ वो 15-10 मिनट हमने उसके बाद शूटिंग की. बट यू स्टार्ट विद एब्जॉर्प्शन. तो ये बुद्धा मतलब ये असली में आप देखेंगे. It's one of the most closest thing to my heart. I like to meet people. I like to shoot their pictures and especially portraiture. Headshots भी करता हूँ. Headshots वही पिक्चर्स होती हैं पोर्ट्रेट, लेकिन वहाँ पे आप जैसे मैं अभी आपसे मिला 5 मिनट आपसे बात की, एक पिक्चर मैंने जैसे मैगजीन्स के लिए मैं काम करता हूँ, तो मैगजीन्स के लिए काम करते हो तो आप उन लोगों को पहले से नहीं जानते. मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर आइदर प्रोफेशनल्स या कुछ अचीव उन्होंने किया होता है तो आप उनके फ़ोटो खींच रहे होते हो, या डिज़ाइनर्स हैं उनके पिक्चर खींच रहे हो, तो उनको आप जानते नहीं तो उनके पोर्ट्रेट्स नहीं ले सकते. पोर्ट्रेट इज़ अ वेरी हैवी वर्ड. पोर्ट्रेट कम्स फ्रॉम समथिंग विच इज़ अबाउट पोर्ट्रेइंग द पर्सनैलिटी. वो बड़ा मुश्किल काम है. 1 मिनट में आप कैसे किसी की पर्सनैलिटी समझ लोगे.
है और एक पर्सनालिटी होती भी नहीं है। हम सभी जो लोग हैं, वी ऑल वेयर मास्क। एंड शी इज ऑल्सो बाइकर। शी राइड्स रॉयल एनफील्ड, इसके पास 3 रॉयल एनफील्ड है, बट इसकी जो मेन मोटरसाइकिल है वो ये वाली है, प्लस शी ऑल्सो हैज अ हार्ले। तो बाइकर है प्रॉपर। बट मैंने उससे बात करी तो उसको कहीं पे था कि मेरी को अपनी मदर से बहुत लगाव है। जो बात है आप उसको पॉलिश करिए, आप दूसरों को कॉपी मत करिए, आप उस चीज को पॉलिश करिए एंड दैट विल मेक यू अ गुड फोटोग्राफर। अगेन शॉट फॉर अ कवर स्टोरी, फैंटास्टिक वुमन। चिल्ड्रन को उस साल एक बड़ी ज़बरदस्त फेलोशिप मिली थी, इनको काफ़ी बड़ा अवार्ड मिला था, कैलिफोर्निया गए थे। सो आई टुक हिज पिक्चर एंड आई वांटेड टू कैप्चर दैट प्राइड, यू नो, फोटोग्राफर। इज अ वेल नोन फोटोग्राफर, वर्क्स फॉर AFP नाउ। अभी ही इज बेस्ड इन सैन डिएगो में, आई थिंक इनकी पोस्टिंग है। विनीत को आप जानते हैं, दिल्ली में है, लाइका एम्बेसडर भी है। तो उनका वो पोर्ट्रेट इसी तरीके से यूज़ किया मैंने, ताकि आई कुड सी, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज विद हिज कैमरा। तो वो एक्सटेंशन है उनकी। Thinking of generating money from food and product. Very good. I'm having a lens hands-on review of TAMRON 150 to 500 mm f5 to 6.7 for Sony mount. So it's a very good option for wildlife photography. It has a very long range of focal length. Okay. Sony E mount. So कैसा लगा? सबसे फेवरेट लेंस कौन सा लगा? This is a pretty good lens, so I want to go into travel and wildlife, and I am will look into telephoto lenses only, and this is pretty good, pretty light. उसको घुमाने से अपर्चर चेंज होगा, बाकी So which lens is this, bro? 35 to 150 mm world's first zoom lens with starting with f2 2.8. F2 से 2.8. Hi sir, how are you? So it's a nice workshop today. आपको कैसा लगा हमारे DCOP स्टूडेंट्स के साथ? अच्छा लगा, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी, काफ़ी मज़ा आया उनके साथ, खासकर आपकी एनर्जी थ्रू आउट सबसे ज़्यादा। Thank you. सुनते भी रहे। Really nice too. Thank you sir for coming DCOP. It was a pleasure. Thank you. And also thanks to TAMRON people. Thank you, good luck to DCOP. DCOP!